wil ik van u weten. Jawel, dat is het. Wat ik van u wil weten is dat het wel zo? Wat ik van u wil weten, beste luisteraars, van abortus. Is het keuzevrijheid? Is het kindermoord of zelfmoord? De vraag aan u, beste luisteraars, is abortus keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord? Dat wil ik van u weten. Onveilig abortus, Suriname, de grootste taboe. Het aantal abortus in Suriname ligt jaarlijks rond het 10.000 in ons landje met zo weinig inwoners. Dus we hebben nu abortus, keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord. Dat wil ik graag van u horen hier bij Radio SGS op deze vrijdag. Jawel, dus we hebben nu een programma. प्यार भरा नगमा पेश करने जा रहा है और वह दोस्तों भाई बहनों जवाब चंद्रा महावीर लाते हैं एक फरमाइश और ये अति सुंदर फरमाइश दोस्तों भाई बहनों लाता जी का नगमा है लेकिन कोई और गा रहा है यानी कि वर्षा हरिचंद एक छोटी सी लड़की है जो इस गीत को सजा रहा है। तो आइए मिलकर सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों, यहाँ जिंदगी उसकी है। प्रोग्राम में पेश करते हैं चंद्रा महावीर। ये जिंदगी उसी की है जो
Jawel, dus we hebben een lovely song on Radio SKS के प्रोग्राम में पेश करे थे चंद्रा महावीर। ये जिंदगी उसी का है जिसकी मैं हो गया। क्या बात का है दोस्तों भाई बहनों, वेरी स्वीट वेरी लवली मजेदार नगमा प्रोग्राम में पेश किया गया है। जब दो कदम आगे चलते हुए आपके साथ मिलकर दोस्तों भाई बहनों जब पेश करते हैं de topic van vandaag, beste luisteraars, misschien een beetje heftig, maar goed. De vraag is aan u allen hier bij Radio SKS op deze dag, beste luisteraars. Jawel. De abortus, dus is het keuzevrij, is het kindermoord of zelfmoord? अगर आप इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो जो भाई बहनों मैं कहूँगा कि u bent vrij om te discussiëren. Jawel, onveilig, abortus Suriname, grote taboe. Het aantal abortus in Suriname ligt jaarlijks rond de 10.000. In ons land met zo weinig inwoners. Beste luisteraars, abortus, keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord. U mag zelf invullen. और यार दोस्तों भाई बहनों एक फरमाइश प्रोग्राम में कर रहा है यानी कि वीर भोला सिंह। तो वीर भोला सिंह का फरमाइश सुनते हैं दोस्तों भाई बहनों मोहित चांद के साथ में। आँखों में बसा लूंगा भाई वाह क्या बात है, मोहब्बत के साथ सांसों में समा लूंगा। Miss you every morning, you're not around, always on my mind. See you everywhere, you're not around, but always in my heart. Miss you every morning, you're not around, but always on my mind. See you everywhere, you're not around, but always in my heart. आँखों में बसा लूंगा सांसों में समा लूंगा। आँखों में बसा लूंगा सांसों में समा लूंगा। तू हाँ भी कहे या ना भी कहे, तू हाँ भी कहे या ना भी कहे, तुम्हें तुमसे चुरा लूंगा। सांसों में समा लूंगा, आँखों में बसा लूंगा, सांसों में समा लूंगा। बिखरी सी इन जुल्फों को जी करता बस देखा करूं। ओ बिखरी सी इन जुल्फों को जी करता बस देखा करूं। प्यारी सी इन आँखों पे जीवन भर कुछ लिखा करूं। तू है ऐसी गजल गाए दिल हर पल, तू है ऐसी गजल गाए दिल हर पल, इतिहास रचा दूंगा। सांसों में समा लूंगा। Miss you every morning, you're not around, but always on my mind. See you everywhere, you're not around, but always in my heart. Miss you every morning, always on my mind. Everywhere, always in my heart. तुम हो प्यार, तुम संसार, तुम हो मेरी पूजा रे। ओ तुम हो प्यार, तुम संसार, तुम हो मेरी पूजा रे।
मन मंदिर में बस एक तू और नहीं कोई दूजा रे इजहार करे मुझे प्यार करे इजहार करे मुझे प्यार करे सारी दुनिया भुला दूंगा सांसों में समा लूंगा आँखों में बसा लूंगा सांसों में समा लूंगा every moment you're not alone. See you everywhere, you're not alone. Always in my heart. See you every moment you're not alone. See you everywhere, you're not alone. Always in my Ja, we dus we hebben nu Mahabrik Sato programma पेश करे थे वीर भोला सिंह ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन रेडियो एसकेएस यावल और आज के टॉपिक के प्रोग्राम में दोस्तों भाई बहनों आपसे बात करें अबाउट जैसे आपने सुना देखा यावल about abortus doorzo भाई बहनों is het abortus is dat een zeg maar zoals ik u dat vertelde van keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord? Wat vindt u daarvan, beste luisteraars? Onveiligheid, abortus Suriname, grotendeel taboe. En aantal abortussen in Suriname liggen jaarlijks rond de 10.000 in ons landje met zo weinig mensen. Dus we hebben nog zoals dat komen. Ligt het aan tekort aan voorlichting of zien we zwangerschap als niet gewoon? Niet bijzonder, maar is abortus keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord? Ongewenst zwangerschap, beste luisteraars. Ik heb een brief van een Sylvia, haar zus. Jawel, ze zegt van, zijn zus is zwanger van en wil de baby niet. Ze wil een abortus, maar is al 5 maanden ver. Is dit levensgevaarlijk? Een artikel over WHO las ik dat er een onveilige abortus een van de belangrijkste doodoorzaak is van meisjes tussen 15 en 19 jaar. Wereldwijd bekeken, dat is toch verschrikkelijk. Ten eerste is het erg dat een meisje op zo'n leeftijd ongewenst zwanger raakt. Maar ten tweede is het erg dat ze kiezen voor een onveilige abortus. Ik begrijp dat je voor abortus soms de gevangenis in moet. En een dame in Chili is ook veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Jawel. En zo zijn er meer van dit soort gevallen. Ook in Suriname is het strafbaar voor zowel abortusnemer als abortuspleger. Tot dus hebben we nu aan u de vraag van, moet het keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord? Zerur, betana dus bij me nu. Jawel. तो ये दोस्तों भाई बहनों एक नगमा प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ यानी कि नॉर्मा सुख की वास्ते नॉर्मा पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुआ है जहाँ तक मुझे पता है तो नॉर्मा जी ik hoop jou niet te mogen teleurstellen dat je op de programma van Radio SKS best wel leuk zal vinden en daarom jawel wil ik jouw ziel in Radio SKS dus en het volgende nummer is helemaal voor jou alleen jawel Norma Kivaste.
दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पूछ लेगा ढूंढ लेगा, पूछ लेगा हाँ ढूंढ लेगा। हाँ तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, हम दोनों के किस्से दुनिया सुनाएगी, मेरी दोस्ती का मेरी दोस्ती का तुझको नहीं पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पूछ लेगा ढूंढ लेगा, पूछ लेगा हाँ ढूंढ लेगा। तुझ में है कुछ बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, तुझ में है कुछ बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, तुझको है ले जाना जहां सबकी नजर है, मेरी हसरतों का मेरी हसरतों का तुझको नहीं पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। Ja, we dus भाई बहनों वेरी लवली मोहब्बत के साथ प्रोग्राम में लाया है या वेल एक यानी कि प्यार भरी नगमा नॉर्मा सुखू के वास्ते या वेल और देखा जाए कि फातिमा छोटकन प्रोग्राम में भी शामिल हो गया ही तो फातिमा ook van harte welkom to Radio SKS Your Choice Your Station. Jawel,
और यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों भाई बहनों. Is het abortus, is het kindermoord, zelfmoord, doodse bij of vrije keuze. Chandra Mahabir die zegt van dus eigenlijk kindermoord, maar soms hebben wij geen keuze. Daarom gaan men rare dingen doen. आगे में देखा जाए तो weer Bola Singh reaction दे रहा है कि de meeste vrouwen, jongere dames die gaat vreemd en dan willen ze abortus, dan ben jij gewoon moordenaar. Want je hebt geen keus. Door angst of bang. Vele jonge vrouwen hadden hun eigen kind vermoord hier in Nederland en Suriname, wat sommigen niet durven naar het ziekenhuis te gaan voor een abortus. Laten doen is ook een reden en keus. En ook kindermoord, vooral als jij geen keuze hebt, dan mag je zeker naar de gevangenis. Jawel, dat was de reactie van Weer Bola Singh hier op Radio SKS. Weer, bedankt voor jouw reactie. En देखा जाए तो आगे प्रोग्राम में मीना शनाई साथ भी दे रहा है. Mina Shanae, een hele goede morgen. Welkom. We hebben het vandaag over de topic दोस्तों भाई बहनों जैसे मैं आप सभी से बताया कि is het abortus keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord? Een of ander vertelde ik u daarover, beste luisteraars, nog verder van zogezegd van abortus in Suriname over het algemeen illegaal, tenzij het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Er is dus een soort van gedoogbeleid waardoor abortus toch mogelijk zijn. Soms helaas tegen hele hoge bedragen. Praat daarom altijd met je huisarts. Jawel, dus zo hebben we. Er is namelijk genoeg mogelijkheid of stap naar de stichting Lobby. Ga niet illegaal te werk, want zoals we al hebben gelezen en gehoord, je kan doodgaan door een foute abortus. En dat zijn niet alleen jonge meisjes die dit soort zeg maar onverantwoordelijke besluit nemen. Ook volwassene vrouwen die ongewenst zwanger zijn, schamen zich om naar de dokter te gaan of ze hebben het geld gewoon niet. Eén dame die meer dan 5 maanden zwanger was, heeft 6000 SRD moeten neertellen. Los van het geld is het verantwoordelijk om op deze termijn een abortus te doen. Na 3 maanden is een abortus levensgevaarlijk. Ja, dus wat bedoel मैं नहीं कहता हूँ, किताबों में लिखा है यारो. Dus jawel. De vraag aan u hier bij Radio SKS, dus bij mijn beste luisteraars, jawel, u mag het ook onderbouwen hoor, van abortus, keuzevrijheid, kindermoord of zelfmoord. या भाई दोस्तों भाई बहनों, गायत्री रामचरण प्रोग्राम में शामिल हुआ है और गायत्री रामचरण कहते हैं कि एक प्यार भरा नगमा. Jawel. तो दोस्तों भाई बहनों, एक प्यार भरा नगमा गायत्री के लिए प्रोग्राम में पेश कर रहा हूं मैं. दरिया में फेंक दो चाबी, मुझे दिल में बंद कर लो,
दरिया में फेंक दो चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना, आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। या भाई दिल में बंद कर लेना, यानी कि आंखों में मत बसाना, क्योंकि अगर आंखों में बसाएंगे तो आगे रास्ता पर यानी कि शराब खाना है तो वहां जाना पड़ेगा। अगर दिल में बसाएंगे तो या वो दिल की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह से प्रोग्राम में पेश करते हैं अभिनगमा, खास करके या वो जो सवाल मिनो, वो कौन है जो दिल में समाया, वो कौन है जो सपनों में आया। गायत्री रामचरण के वास्ते प्रोग्राम में लाया है। वेरी लवली। आज उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पसंद जरूर आया है। चलते हैं आगे। दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में बताते हैं अबाउट ongewenst zwangerschap, abortus, is het vrije keuze, zelfmoord of
kindermoord. Wat vindt u daarvan, beste luisteraars? Jawel, u mag natuurlijk uw mening hier bij Radio SAS geven. Dus u zou niet willen weten van wat voor methode men allemaal niet gebruikt om abortus te plegen. Een breinaaldmethode, kent u dat? Een breinaaldmethode. Komt het door een zwangerschap, depressie of stress, waardoor ze niet meer helder kunnen denken, want tot keuze, want toch kiezen vrouwen nog steeds voor onveilige methodes. Er zijn echt nog vrouwen die kiezen voor bijvoorbeeld een breinaaldmethode, met alle gevolgen van dien. Meestal kiezen ze een abortuspil, die overigens vaak illegaal wordt verkocht. Wat ze niet weten is dat ook deze methode erg gevaarlijk is. Het maakt namelijk maar tot 8 weken zwangerschap gebruikt worden. En het is een verschrikkelijke methode om je zwangerschap af te breken. Je kan het vergelijken met een miskraam, zeer pijnlijk. Is abortus een keuzevrijheid of is het een kindermoord, beste luisteraars? Persoonlijk vind ik dat je als vrouw zelf moet bepalen als je abortus wil of niet. Zolang het maar voor de 3 maanden is. Anders is het zelfmoord en lopen veel ongewenste kinderen rond. Kinderen van moeder die letterlijk zeggen, ik wil dit kind niet, dus waarom zou ik ervoor gaan zorgen? Dus erbij benoemen. Jawel, het is toch wat, hè. Wat de schuld van zo'n kind, die heeft niet gevraagd, aan u niet gevraagd om op de wereld te komen, toch? Ja, zo had dus erbij benoemen, jawel. Age programma देखा जाए तो Fatima Chotkan शामिल हुआ है. Fatima जी, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. मीना शनाई के वास्ते एक नगमा प्रोग्राम में ला रहा हूँ, तो मीना जी सुनिए और मजा लीजिए. भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा. कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो. भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा. कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो. या भाई ये क्या हो रहा है, कोई कहेगा दीवाना और कोई कहेगा परवाना. दोस्तों भाई बहनों, ये नगमा तो हमको इस तरह से डरा दिया कि करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या. दोस्तों भाई बहनों,
भरोसा कर चांद नहीं यार, ये गीत दोस्तों भाई बहनों, सॉरी, इसमें कुछ दाल वाला काला है, तो एक दूसरा नगमा प्रोग्राम में ला रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों, या सुनते रहना। राजी अरवा के बाल
सजना मैं दीदी दादी लाल ना बिल्ली सुनो हमरा जीरवा के बाल मना बिल्ली Ja, we dus bij me nu. मजेदार नगमा प्रोग्राम में पेश किया है और यवल बस इसी देर में यानी कि फेसबुक अपना चाल दिखा दिया। यवल कोशिश कर रहे थे मैं फिर से इन लॉक करने के लिए और दोस्तों भाई बहनों हम आपसे बात कर रहे हैं यवल about abortus. Is het vrije keuze? Is het zeg maar is het moord of is het zelfmoord? Deze kijken, dus bij we nu. Programma abortus, vrije keuze, kindermoord of zelfmoord. Jawel. De zelfmoord moet u gaan kijken naar jezelf toe. Hè? Van, want zoals u dat van mij vernomen hebt, dat abortus natuurlijk wel behoorlijk gevaarlijk kan zijn. En vooral als het niet op een goede manier plaatsvindt. Miskraam, dus bij we nu. Er wordt verteld van, ik heb ook wel eens een abortus moeten doen. Ik neem het liever in curettage. Als ik daar zeg maar verdrietig in het uitslaapkamer. Ik had namelijk een miskraam gekregen en het vruchtje moet in het ziekenhuis onder narcose verwijderd worden, vertelt een dame hier bij Radio SKS. Maar gelukkig was ik niet de enige. Er waren een hoop andere dames. Ik voelde me direct minder verdrietig. Maar het bleek een teleurstelling. De dames hebben niet net zoals ik een miskraam gehad, maar ze hadden een abortus gepleegd. En te merken aan het gesprek die ze voerden, was het voor sommigen niet de eerste keer. Ik kon het met mijn slaapkop niet laten om met die jonge dames te praten. En ik vertelde ze ook waarom ik daar lag. Want in de eerste instantie dachten ze dat ik ook zwangerschap wilde, zeg maar, uitdragen. Ik kwam er in de ochtend achter dat er inderdaad komt door een gebrek aan voorlichting. Al heel vroeg beginnen de dames aan een onbeschermde seks. Het lijkt bijna of een zwangerschap niet voorgesteld is. Ze spraken erover alsof het een kledingstuk is die ze niet willen hebben. Veel mensen zijn ook wel tegen abortus, maar dezelfde mensen helpen een jonge moeder in nood niet altijd met hun kind. Ze staan de jonge moeders niet bij, niet financieel en vooral niet emotioneel. Jawel, दोस्तों भाई बहनों क्या क्या प्रोग्राम में बता रहा है क्या क्या हो रहा है और मैं बता रहा हूँ दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में कुछ रिएक्शन आया भी था लेकिन रिएक्शन तो निकल गया है क्योंकि फेसबुक अपना चाल दिखा दिया था तो अब वो रिएक्शन मैं नहीं ला पाऊंगा आपके सामने। बहुत से लोग जाने की रिएक्शन दिया था और फेसबुक के द्वारा क्योंकि फेसबुक गिर गया था तो जाने की फिर से जब इनलॉक कर दिए तब उखन निकल जाए तो देखिए तो कहूँ और का नाम gegevens मिले है कि ना। Oh ja, ik heb het hier nog staan. Gelukkig, 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 gelukkig. देखिए भाई दोस्तों चंद्रा महावीर कहते हैं दोस्त dat is eigenlijk kindermoord maar soms hebben wij geen keuze en daarom gaan men rare dingen doen. आगे प्रोग्राम में बताते हैं वीर भोला सिंह प्रोग्राम में कहते हैं de meeste vrouwen jongere dames die gaat vreemd en dat willen ze abortus. Dat had ik je over verteld. En इसके बाद में
Ja, कुछ नहीं. Shirley Persu कहते हैं कि abortus moet een vrije keuze zijn. Jawel. Weer Bolasing कहते हैं कि jawel, als je vreemd, dan wel Shirley. En dat gebeurt vaak in Suriname, dan ben je gewoon een moordenaar. कहते हैं वीर भोला सिंह. आगे देखा जाए तो यानी कि कौशल हिमाय कहते हैं men moet niet een vrouw beschuldigen, vind ik mijn mening. Weer Bhola Singh बाद में कहते हैं कि mannen worden niet zwanger. Shirley Persu कहते हैं कि je moet kinderen niet zomaar op de wereld zetten. Een kind moet gewild en gewenst zijn. Denk goed na als je seks hebt wat de gevolgen hiervan zijn. Een kind heeft niet gevraagd om op de wereld gezet te worden. Jawel. और आगे में बताते हैं वीर भोला सिंह, ja, dat klopt Shirley, maar die jongeren van nu denken niet, zo onderschat hun niet. Ze gaan gewoon laten abortus doen en hier een geld zoeken. Jawel. या भाई दोस्तों भाई बहनों, होता रहता है जिंदगी में, कभी इधर तो कभी उधर. क्या करें. या वाल दोस्तों भाई बहनों, चलते हैं. बहुत से बात हो गई है इसके बारे में और कुछ कहने वाले थे, लेकिन या वाल दोस्तों भाई बहनों, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब जाने की वक्त हो गया है. देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, लाइलू निसारोजन प्रोग्राम में बड़ी देर से यानी कि प्रोग्राम सुन रहा है. लाइलून जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम. एंड देखा जाए तो जोसेफीन भी प्रोग्राम में शामिल हुआ है फ्रॉम ट्विच. Jawel. En Twitch valt niet weg, beste luisteraars. En daarom moet je gewoon Radio SKS luisteren via de Twitch. Zo dit. तो आइए दोस्तों, एक नगमा प्रोग्राम में पेश करते हैं इसी तरह से, खास करके jawel voor niemand minder dan Miss Lailun Nisarojan. झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा लगता है. हिलाकर होंठ जब भी हौले हौले गुफ्तगू को साज करती हो, अच्छा लगता है. खुशबू से बहलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, आँख में आँखें डाल के कह दो ख्वाबों में टहलाओ ना, जरा शॉर्ट में बतलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना. ला 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 अलग एहसास होता है तुम्हारे पास होने का, सरकती सरसराहट की नदी में रेशमी लम्हे भिगोने का. हो जरा सा मोड़ कर गर्दन जब अपनी अदा पे नाज करती हो, अच्छा लगता है. लफ्ज़ों से बहलाओ ना, झूठी मूठी बहकाओ ना, हाथों को हाथों में लेके वो तीन शब्द टपकाओ ना, जरा शॉर्ट में बतलाओ ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना, हाँ सीधे पॉइंट पे आओ ना.
सांस को तेरी गली में गुनगुनाने छोड़ देता हूँ ओ तुम अपनी खिड़कियों को खोल कर जब भी नए आगाज करती हो अच्छा लगता है गली 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 भटकाओ ना घड़ी घड़ी उलझाओ ना सेंटी हो मैं जान गई हूँ एक्शन भी दिखलाओ ना सारा शॉट में बतलाओ ना सीधे पॉइंट पे आओ ना ओ सीधे पॉइंट पे आओ ना ओ सीधे ओ सीधे ओ सीधे पॉइंट पे आओ ना Ja, we dus op hem मजेदार नगमा प्रोग्राम में पेश करे थे खास करके jawel voor Lailun Nisa Rodin. En SKS Ria is ook aangeschoven bij Radio SKS. Ria, ook van harte welkom en just enjoy. Dus भाई बहनों समाचार और न्यूज की ओर चलते हैं आपके साथ मिलकर देखा जाए कि प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten. Washington D.C. De geheime dienst plaatste bij het bericht een foto van een man in een grijze hoodie. De explosieven werden onschadelijk gemaakt door bomexperts. Volgens ABC Nieuws waren ze echt en in potentie gevaarlijk. Een deel van de bestelde coronavaccins komt later dan minister De Jonge maandag in zijn Kamerbrief schreef. Zeker 1 miljoen vaccins van verschillende farmaceuten worden later geleverd.